Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Louder, Haribo.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everybody, Haribo, vibrate tongue. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Everybody, Haribo. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. 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 Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Jaya Radha,
Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radha. Jai Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radha. Jai Gauranita, Jai Gauranita. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gaurango, Gaura Hare. Patita Pavana, Gaura Hare. Patita Pavana. Patita Pavana Gaura Hare. Gaura 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 Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Prabhupada, 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 Gurudev. Jai Jai Prabhupada, 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 Gurudev. Jai Vishnupada Paramahansa Acharya Stotra Sat, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Liberty Founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vishnupada Paramahansa Acharya Stotra Sat, His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Ki Jai. Jai Vishnupada Paramahansa Acharya Nitalila Pravishtam Gaur Kishodas Bhavaji Maharaj Ki Jai. Jai Vishnupada Paramahansa Acharya Nitalila Pravishtam Bhakti Vinod Thakur Maharaj Ki. Namacharya Haridas Thakur Ki. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जाए। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ राधा को श्याम गिरी गोवर्धन की जाए। वृंदावन धाम की जाए, मथुरा धाम की जाए, द्वारका धाम की जाए, रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जाए, जगन्नाथपुरी धाम की जाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जाए, मायापुर नवदीप धाम की जाए, Gaur Premanande. All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories Sri Guru and Gauranga. We would like to welcome everybody for Janmashtami festival and Srimad Bhagavatam class in the morning. We appreciate you all coming here. There are so many who have not come, congregational devotees. We also pray to Radha Madan Mohanji to bless them so that they can develop a unflinching faith unto the lotus feet of Guru and Krishna. Without the sanction of Guru and Krishna, nothing is going to happen to our spiritual life. Without their sanctioning authority, we cannot get an iota of spiritual life. It's very essential for those people who have come to the level of an initiation or got initiated by an acharya to keep intact their spiritual life by adhering to the instructions of an acharya. Srimad Bhagavatam says without adhering to the instructions of the acharya, one cannot progress on the path of spiritual life. Because Lord arranges these acharyas to connect
with the jivas so that they can go back home, back to Godhead. And after achieving the instruction and the shelter of an acharya, one has only one business, that is how do one progress on the path of spiritual life without any hindrances, without any roadblocks, or without any hiccups. So today is Janmashtami. We'll try to study one shloka from the Bhagavad Gita. You all have been hearing the Krishna Katha from the past so many days. And in those days, you have heard wonderful Krishna Katha, Krishna Leelas, thus soaking yourself in the pastimes of Krishna. I don't know how many people were able to make it, but this temple facilitates all these things for the welfare of the mankind, irrespective of caste, creed, and religion, to come and congregate and progressively become inclined to serve the Lord through the different, devotional services offered from this center. So please take this opportunity of human life to transform yourself from an grossly sense gratifier to a person or who's completely engaging all these senses in the service of Krishna. That is our responsibility. So let us hear the shloka together and chant the shloka together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janma karma cha me divyam evam yo veti tatvata tyaktva deham punarjanma neti mameti swarjuna. Janma karma cha me divyam evam yo veti tatvata tyaktva deham punarjanma neti mameti swarjuna. Janma karma cha me divyam evam yo veti tatvata tyaktva deham punarjanma neti mameti swarjuna. We'd like to go straight away to the translation of the Bhagavad, this verse. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. आप कृपया दोहराइए और समझिए, और उस समझने के बाद फिर जो दोहराएंगे उसमें कुछ अलग रस होगा. Right? One who knows the transcendental nature of my appearance
and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, the Lord descends from his transcendental abode is already explained in the earlier verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from the material bondage. कि केवल ये जानना कि भगवान कैसे अवतरण होते हैं और क्यों अवतरण होते हैं, और भगवान अपनी लीलाएं इस धराधाम में करते हैं, और उन लीलाओं के लिए जिसकी समझ उत्तम श्रेणी की हो जाती है, उसे पुनः वापस इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सदैव भगवान के धाम में चले जाते हैं। केवल इतना, मगर है बहुत कठिन। हाँ, isn't it? अगर इसी पे थोड़ा ध्यान करेंगे, अगर हट के हम लोग इस पर लेक्चर देंगे तो पूरा शाम तक बोल सकते हैं हम लोग कि वर्तमान स्थिति हिंदुओं की क्या है या सनातनियों की क्या है, और क्यों उनकी समझ में नहीं आता, वो भी हम आपको बताएंगे। यही शास्त्र में बताया गया है। और जब तक जीव शास्त्र नहीं अध्ययन करता, उसका जीवन अंधकारमय रहता है। इसीलिए भारत में लोग कहते हैं, बाकी सब वर्ग के लोग कहते हैं, हिंदुओं के तो कई भगवान हैं, हम लोगों का भगवान एक ही है। हिंदुओं के कई भगवान। और कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। मोहम्मद का स्वरूप हो सकता है, मुसलमानों का स्वरूप हो सकता है, मगर अल्लाह का स्वरूप नहीं हो सकता। हाँ, isn't it? क्रिश्चियन लोग तो कहते ही हैं जीसस क्राइस्ट भगवान का बेटा है। चलो मान लिया भगवान का बेटा है, तो आप लोग सच्चे तरीके से उनको फॉलो कीजिए। नहीं, सनातन धर्म का एक और बाजू है, जिसको कि आजकल लोग कहते हैं जैन धर्म। वो भी अपने आप को अलग समझने लगे हैं। कितनी मूर्खता है। और यहां तक कि 500 वर्ष पहले सिख लोगों को जुटाया गया था सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, और वो सिख लोग भी बोलते हैं ये हम लोग कुछ अलग हैं। हाँ? क्योंकि जब हम असली धर्म से च्युत हो जाते हैं तो अपने आप को अलग कहलाने में कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि उस धर्म को पालन करने के लिए हमें कुछ भी कर लेते हैं। दारू भी पी लेते हैं, मांस भी खाते हैं, बकरी भी खाते हैं, और भी बला 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 करते रहते हैं। मगर यहां पर इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम।
स्वयं भगवान डायरेक्टली अपने अनन्य भक्त को बताते हैं। उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। हमारा जन्म और कर्म क्या है? बद्ध है। हम रोके आते हैं और रुला के चले जाते हैं। Isn't it? जब भगवान आते हैं वो अपनी प्रसन्नता के लिए आते हैं। और क्या करने के लिए आते हैं? यदा दाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तथात्मानं सचाम्यहम्। कई भगवान नहीं हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भी इस माध्यम से सुनना चाहता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के, वो अपने दिल में ध्यान रखें, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे कोई जैन हो, भगवान एक ही है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के कारण है। इसको समझना ही मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी है और वो मुक्ति के पथ पे चला जाता है। दुर्भाग्य ये है कि हिंदू लोग अपने शास्त्रों को पढ़ नहीं पाते, उसके प्रति निष्ठा नहीं कर पाते। आचार्यों के निर्देशन के अंतर्गत वो इन ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते। केवल वो पशुओं की तरह आहार निद्रा भय और मैथुन में लगे हुए हैं। इसलिए उत्तम पराकाष्ठा आध्यात्मिक में वो आगे बढ़ नहीं पाते। जब आगे बढ़ नहीं पाते हैं तो कई भ्रांतियां हो जाती हैं कि भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं, और कुछ बोलते हैं कि सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है। हाँ? तो अपने मन को दिलासा देने के लिए कुछ भी बकवास करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बकवास सुनने के लिए बड़े आतुर रहते हैं और मेन लक्ष्य को भूल जाते हैं। गीता को नहीं पढ़ पाते, भागवत को नहीं पढ़ पाते, इसलिए उनकी भ्रांतियां कुछ पृथक पृथक हो जाती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ तो उससे पहले उन्होंने योग माया को भेजा। योग माया जो है हर जगह उनका स्वरूप बिखार देती है। इसलिए शाक्त लोक और वैष्णव लोक में हमेशा कभी कभी डिफरेंसेस आ जाती हैं, क्योंकि हर जगह योग माया का स्वरूप जो है भारतवर्ष में पूजा जाता है। नॉर्थ में चले जाएंगे वैष्णव देवी, बनारस में जाएंगे तो दुर्गा देवी, ईस्टर्न इलाके में चले जाएंगे तो भद्रकाली, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। ये योग माया के ही स्वरूप है। योग माया का इन्फ्लुएंस जब जीवों पर पड़ जाता है तो वो क्या करने लगते हैं? इंद्र तृप्ति की तलाश में रहते हैं। Those who are worshipping the demigods, Krishna says in the Bhagavad Gita itself, they are desiring for material, I will not say destruction, but I will say material unlimited desires. And as long as they have
interest in fulfilling the material desires, they will continue perpetually remaining in this material world. Because their inclination is all the time to enjoy their senses. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रथा बीच. So this predominant thing is called bhakti, and unless we inculcate ourselves in the process of bhakti, we cannot understand who Krishna is and what are his wonderful pastimes. To understand these pastimes, one has to delink himself from the material world and get completely absorbed in wonderful devotional activities. Because we are Buddhas, we cannot understand of our own who Krishna is. The Acharya facilitates the devotional service for us, and through the process of devotional service, even Prahlad Maharaj now in Satyuga says, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smranam, Pada Sevanam, Archanam, Dasam, Sakyam, Atmanivedanam. These all processes are applicable in the Kali Yuga also, and the Lord facilitates in the form of a Gauranga to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So when this holy name is accepted, adopted, inculcated in our all activities, you become purified. And when you keep on getting purified and purified and purified, the influence of the Yogamaya completely clears your so much clouds on your consciousness. And then you can connect with the process of devotional service. And this devotional service enables you to understand what? Janma and karma of Krishna. Otherwise, it is very difficult. Because those who are not Krishna consciousness, those who have not adopted the process of Krishna consciousness, they think Krishna is also a human being. What is that shloka? Huh? What is that shloka? No, Mudhas. Ma Mudha. What is that? Ma Mudha? Nam Amo Dushka. Again, the word Maya comes. Isn't it? So to transcend this situation of influence of Maya, she can allow you only to come out of these clutches when you are going to go into the service of Hari. Otherwise, she is going to keep you always under the paw. Maya is always riding the line. And the lion has got very big paws. And the jivas and the rakshasas are under the paw of this lion all the time. But the moment you say Hari, 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 this allows you to rise and connect yourself with Krishna. That's why Prabhupada says here that one who can understand the truth of the appearance of the personality of God is already liberated from the material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting his present material body. Such liberation of the living entity from the material bondage is not at all easy. इतना आसान नहीं है माया को लांघना.
और भगवान भी कहते हैं मम माया दुरत्या, मम माया, isn't it? So, but it is very easy for the devotees to cross over because they have taken shelter of Krishna as Krishna is demanding from them. सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापी मोक्षसामि महासुच। जिन्होंने संपूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लिया है और कृष्ण उनको आश्रय प्रदान कर देते हैं और माया उनके सामने कभी भटकती भी नहीं है। Such liberation of the living entity from the material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord is only partial. बहुत से ऐसे गुरुवर आपको बताएंगे कि हम भगवान में मर्ज हो जाते हैं, एकाकार हो जाता है। उन मूर्खों को यह भी नहीं मालूम कि उस एकाकार का मतलब क्या है। इसलिए but the devotees simply by understanding the transcendental nature of the body and the activities of the Lord attain the abode of Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. प्रभुपाद जी की जय जयकार हो। सदैव अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के केंद्रों में सदैव श्रीमद् भागवतम सुनाया जाता, और श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों का और भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन होता। कितने नसीबदार हैं वो भक्त जो सदैव श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बना के माया से मुक्त होने का हर पल हर क्षण अनुष्ठान करते हैं। हर पल हर क्षण। क्यों? क्योंकि वो सदैव नाम गुण लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं वो सदैव मेरे नाम रूप गुण का लीला का रसास्वादन करते हैं। उस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वयं कृष्ण उनको अपना आश्रय प्रदान कर देते हैं, और जब वो शरीर छोड़ देते हैं, जब वो शरीर छोड़ देते हैं, उनके जीवन में क्या है? सदैव अंत में रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सदैव उनके जीवा पे नाम रहता है, और ऑटोमेटिकली ये नाम जो है मुक्ति का साधन बन जाता है और मुक्त हो जाता। क्योंकि इसी भागवत गीता में भगवान बोलते हैं अंत काले च माम समरम। ऑटोमेटिकली हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारी जर्नी को आसान कर देते हैं। केवल हमें इस नाम में रत होना है। माया से भी परे होंगे, मुक्ति से भी परे होंगे, स्वयं भक्ति में रह के भगवत धाम जा सकते। भक्ति में रह के भगवत धाम जाएंगे, और हर क्षण जब कृष्ण लीलाएं करेंगे या उनका रसास्वादन करेंगे तो आपको आनंद ही आनंद आता रहेगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ऐसी लीलाएं साधारण मनुष्य कर नहीं सकता। जब भगवान रेंग रहे थे, जब केवल भगवान रेंग रहे थे, वो पूतना की छाती पे रह के पूतना का प्राण निकाल दिए। पूतना का प्राण निकाल दिए और उनको ऐसा वर दिए कि आप मेरी मां हैं। भले ही आप कालकूट लेके मेरे को मारने के लिए आए थे, मगर तुम्हारा ये कालकूट
मेरे को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, मगर तुमने जिस भाव से कालकूट पिलाया उस भाव की भी जय जयकार हो, मैं तुमको मोक्ष प्रदान कर देता हूं। ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण। इनको भगवान बोलते हैं, न कि उनका स्वरूप नहीं है? न कि उनको स्वरूप नहीं है। हम मनुष्यों को भी काटेंगे, पशु को भी काटेंगे, फिर बोलेंगे कि हमारा भगवान बड़ा है। ये भ्रांतियां सब केवल मूर्खता का प्रधानता है। और आजकल पूरे विश्व भर में डेमोक्रेटिक सेटअप होने के नाते हम किसी को प्रहार नहीं कर सकते, मगर केवल प्रेम ही जता सकते हैं। जब भगवान बोलते हैं कि जो माया के ग्रस्त हो जाते हैं, वो मदहोश हो जाते हैं, मगर उनको भी भगवान प्रेम करता है। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, देयर आर मेनी ट्रांसडेंटल फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के अनन्य दिव्य स्वरूप हैं। या तो वो भक्तों के द्वारा प्रकट किए गए, या भगवान के अपने लीला करने के लिए प्रकट किए। One has to understand the fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empirical philosophers, as stated in the Vedas. Ekadevo nitya leela anurakto bhaktavyapi hriday antaratma. The one supreme personality of God is eternally engaged in many, many transcendental forms in relationship with his unalloyed devotees. This Vedic version is confirmed in the verse of Gita personally by the Lord. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and of the supreme personality of Godhead, who does not waste time in philosophical speculations, attain the highest perfection stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain the liberation. श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में श्रद्धा कोमल होने के कारण हम कोई भी कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए संघ की बहुत आवश्यकता रहती है। जिस तरीके से एक पौधे को हरा भरा पेड़ बनाने के लिए बहुत एहतियात जताना पड़ता है, इसी तरीके से अपने निजी भक्ति का पेड़, भक्ति लता को भी सुरक्षित करते 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 आगे बढ़ाना है। हमें उसको सींचना पड़ेगा, स्वयं को सींचना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हमेशा हमें श्रवण करना है, हमेशा अर्चना करना, हमें संतों की सेवा करनी है। इस तरीके से हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में आज का दिवस जो भगवान अपीयर हुए, भगवान, दिस इज वंडरफुल प्लेस, चैप्टर नंबर 2 में देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, और ध्यान से सुनिए आप। कंडेंस वर्जन ऑफ द प्रेयर्स ऑफ द डेमीगॉड्स। मैं सब कुछ बता नहीं रहा हूं, मगर थोड़ा थोड़ा सा उसमें आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। When the supreme personality of God had entered the womb of Devaki to kill Kamsa, all the demigods understood that the Lord was living within Devaki's womb, and therefore in veneration they offered him the Garbha Stuti prayers. Kamsa, under the protection of the father-in-law Jarasan, and with the help of demonic friends like Pralambasur, Bakasur, Chanur, Trinavrata,
Agasur, Mushtika, Bana, and Bhaumasur began oppressing the members of Yadu dynasty. That's why Krishna is saying, Yada Yadahi धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. तो भगवान आने से पहले वहां पर कौन अत्याचार कर रहे थे? ये सभी राक्षस अत्याचार कर रहे थे. Okay? Or therefore the members of the Yadu dynasty left their homes and sought their shelter in the states of Kuru, Panchal, Kekeya, Salva, Vidarbha. वहां से सभी चले गए क्योंकि बहुत उपद्रव हो गया था. Only some of them stayed with Kamsa as nominal friends. After Kamsa killed the Sadgarbhas means 6 children of Devaki. Then what happened? Anantadev entered Devaki's womb and was transferred to the womb of Rohini by the manipulation of Yogamaya, who was following the order of Supreme Personality of God. The Lord himself, who was soon to appear as the 8th son of Devaki, ordered Yogamaya to take birth from the womb of Yashoda Devi. Because Krishna and his potency, Yogamaya, appeared simultaneously as brother and sister, the world is full of Vaishnavas and Saktas. Prabhupada ji bata rahe hain. And therefore, there is certainly some rivalry between them. Vaishnavas worship the Supreme Personality of Godhead, whereas Saktas, according to their desire, worship Yogamaya. In forms like Durga, Bhadrakali, Chandika. And because Shankarshan appears in order to increase the love of Krishna, he is known as Baladev. One may take auspicious strength from him to develop spiritual strength so that you can understand the pastimes of Krishna so nicely. It is not possible for us to understand these super excellent pastimes of Krishna without the intervention of an acharya who is coming in parampara. That is why once you take, this is the greatest science. One who's a Vaishnava Acharya, he can make you really understand these wonderful pastimes. And once these pastimes are completely planted in your heart all the time, that is itself liberation. That is itself, attaining that state of consciousness where you are completely trying to understand these wonderful pastimes, and these pastimes purify your consciousness very, very nicely, and you can understand everything very nicely. Without understanding these pastimes, there is no question of attachment to these pastimes. Superficially, you may say that Krishna lifted Govardhan, Krishna killed the demon, Krishna killed this, Krishna killed that. But now, why? How these demons within us will be killed? It will be only possible when we are completely knowing the transcendental knowledge from a transcendental acharya. Krishna says in the Bhagavad Gita, without taking the shelter of an acharya, tad vidhi pranipatena parprashnena sevaya ubdikshante jnanam jnanine tattva-darshan. Why should Krishna say tattva-darshan? Tattva-darshan means who is adhering the truth, who has followed the truth, and who has understood the truth, and he is making others to understand the same truth without any deviation, without any speculation, and without any adulteration. And there that resolute bhakti emerges in every jiva, that he is ready to give up every attachment which can be the cause of his impediment on the path of devotional service. That's why you will see the Krishna Bhaktas are always on the path of detachment. Why? Because they are giving 100% to Krishna.
Krishna Bhakti. And naturally, this Krishna Bhakti, the process of Bhakti gives you back the real renunciation. And this renunciation allows you to serve Krishna. And through this process of bhakti, you become more and more and more engrossed in the devotional service. And when you're engrossed in the devotional service, then automatically ये सब भगवान का काम है कि आपको कहां लेके जाना है, क्या करना है, वो उनका काम है. आप 100% अपनी भक्ति में दे दीजिए, 100% अपने नाम स्मरण में दे दीजिए, 100% अपने आध्यात्मिक जीवन को दीजिए, तो भगवान सब काम कर सकते हैं. So यहां पर it is said that because of the Lord's presence within the womb of Devaki, all the demigods came and offered the prayers. The Supreme Personality of Godhead, they said, they said is eternally the absolute truth. The spiritual soul is more important than the gross body, and the super soul Paramatma is still more important than the soul. The Supreme Godhead is absolutely independent, and his incarnations are transcendental. The prayers of the demigods glorify the exalted devotees and explain the fate of a person who superficially considers themselves liberated from the condition of material nature. जब आप देवताओं का प्रार्थना सुनोगे तो आपको ध्यान आएगा कि आप किस स्तर पे हो. देवताओं के भी प्रार्थना में इतनी शक्ति है क्योंकि वो भगवान को प्रार्थना करते हैं. तो हमारे प्रार्थना को समझने में आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हम किस स्तर की प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं. So then when a devotee fully surrenders at the lotus feet of the Lord, he is completely liberated from the fear of material existence. This is wonderful, isn't it? Aren't you all fearless? Tell me, yes or no? That is the nature of a devotee who is chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भक्त कह रहा होगा कि मेरा क्या होगा. बताइए, कभी आपने सुना कि भक्त बोलता है मेरा क्या होगा? वो भक्त जो है सदैव क्या बोलता है? जिस विधि राखे राम उस विधि रहिए. Whatever Krishna की मर्जी जैसे होगा, he will take care of me. This is an unflinching faith in the devotional service and in the lotus feet of Krishna. So he is not bothered about himself. At any given time, he is not bothered. He is very, very confident. Is very confident that Krishna is going to protect me all the time. Avashya rakhevo vishwas. That is the beauty of a devotee. He is not getting deterred at any given time. So that is the situation, you see. By explaining why the Supreme Personality of God descends, the prayers of the demigods clearly confirm the Lord's statement in the Bhagavad Gita 4:7. Yada yada hi dharmasya glanirvam. So we know that why he is coming, okay? Then there is something very important. From the almost about 7 days, I have not been able to sleep in my normal time. 7 days, 8 days, okay? So please forgive me if I will be doing any mistakes or anything. Every time I have been sleeping around 1 o'clock, 2 o'clock. And yesterday I couldn't sleep because I had gone to different places for programs. So I returned at about 3 o'clock in the morning with some other devotees. So I'm continuously, on the run. So so yes. Yeah, that's it.
Yeah, second shloka of the sorry, the 10th shloka of the chapter number 4. जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये श्लोक है। उसके बाद जो ये श्लोक है, तो वो तभी आप आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। वो अगर भूल जाएंगे कभी, तो तब हम नहीं आ सकते। व्हाट इज दैट, you know that wonderful shloka? You all must recite that shloka, that वीतराग भय क्रोधा मन माया मम उपासिता भाव ज्ञान तपस्या पूत मध भाव आगता। जन्म कर्म च में दिव्यम तो हो गया, मगर तुम सही हो क्या? भगवान ने तो बोल दिया, तुम मेरे जन्म कर्म को जानो, मैं तुमको लिबरेट करूंगा। मगर उसके साथ में ये दूसरा श्लोक भी बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे हैं? वीत राग भय क्रोध। व्हाट इज दैट? फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, आसक्ति से विरक्ति। अपने अपने गले में झांक के देखो, किसको कृष्ण में ले जाते हैं? इट्स नॉट एन आर्टिफिशियल थिंग। हमने टकला कर लिया, सिंडी रख दिया, कंठी माला पहन लिया, हो गया भाई। ध्यान से सुनो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कृष्ण डिमांडिंग? वीत राग भय क्रोध. This is very, very, I started with something, but this was my topic today. But you reminded me. Thank you very much. Vaishnava Angri Prabhu. Because you don't know, because what Krishna is going to make you speak, you are not in control of that. So, attachment. Free from attachment. Everybody is attached to something, isn't it? Yes or no? आसक्ति है क्या? जो आसक्ति के बगैर है, जरा हाथ खड़ा करो, बताइए ना। तो ये आसक्ति को कैंची लगाना पड़ेगा। अप्लाई सीजर्स टू दिस आसक्ति। Then what will happen? Already जो fear है, डर है, उसको भी उसी को डर होता है जो कृष्ण आश्रय में नहीं रहता है। जिसने कृष्ण का आश्रय लिया, उसका डर कैसा? He is never, because डर उसको रहता है जिसको माया का इन्फ्लुएंस है। डर उसको रहता है जो रात में चलते हुए रस्सी को देखता हुआ मगर लग समझता है कि ये सांप है, क्योंकि वो माया के चंगुल में है। मगर जिसने कृष्ण आश्रय ले लिया, वो उसका कोई डर नहीं। सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल क्या है भाई? सतयुग में प्रहलाद महाराज, कलयुग में प्रभुपाद। सतयुग और कलयुग दोनों की एग्जाम्पल ले लो भाई, और तुम्हें कैसे भक्त बनना है, यू हैव टू डिसाइड। एंड देन व्हाट हैपेंस? एंड एंगर बी फुली एब्सॉर्ब्ड। जब तक क्रोध में आप सदैव रहेंगे, तो कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। एंड it is said, taking refuge in me, many persons in the past became purified. पहले भी जिन्होंने मेरा आश्रय लिया, वो पवित्र होके मेरे निज धाम में प्रवेश कर गए। ये भगवान स्टेटमेंट तो देते हैं, मगर एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं। बोले पहले बहुत से लोग मेरे धाम में आ गए,
तुमको अगर मेरे धाम में आना है, तुमको क्रोध, भय और आसक्ति से छुटकारा प्राप्त करने के बाद ही आ सकते हो। एंड मेरा दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान की लीलाएं। दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान का दिया हुआ भागवत गीता है। दिव्य ज्ञान क्या है? उद्धव को गीता सुनाया है। ये जो गीता का जो ये ज्ञान आ रहा है, वो हमको पवित्र कर सकता है। मगर दुर्भाग्य यह है कि संसारी जीव इस ज्ञान को पढ़ता नहीं है, बॉलीवुड का सॉन्ग सुनता है सुबह से शाम तक, और वही नहीं, उस बॉलीवुड के गाने पर नाचता भी रहता है। हा? तो उसके गाने पे नाचने वाले को थोड़ी विरक्ति मिल सकती है। हा? अगर आप राइस बोओगे तो गन्ना थोड़ी उगेगा। हाँ, if you are doing, if you are sowing the paddy, how can you get the sugar cane? And if you are dwelling in the sense gratification, how can you get Krishna prem? इंद्र तृप्ति को परित्याग करके ही कृष्ण प्रेम हो सकता है, तब जाके आप आध्यात्मिक जीवन के उन्माद में प्रवेश कर सकते हैं। And thus they all attained the transcendental love for me. ऐसा करने के बाद में तभी जीवों को मेरा प्रेम प्राप्त हुआ है। Isn't it? प्रभुपाद जी, हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद, कैसे प्राप्त कर लिए? निर्भयता वृंदावन में प्राप्त किए, आसक्ति को परित्याग कर दिए, और ब्रज में बैठ के 20 साल तपस्या किया, और भगवान के सभी सुंदर ग्रंथों को ट्रांसलेट करते हुए अपने मानस पट पे उसको इस तरीके से रख दिया कि कृष्ण के अतिरिक्त उनके जीवन में और कुछ सूझा नहीं। और ऐसा ही व्यक्ति आपको अपने नियमावली देके आपको भी सुंदर भक्त बना सकता है, क्योंकि ये नियमावली उनकी नहीं है, ये कृष्ण की ओर आई हुई कृपा है आपके ऊपर। Getting from Rupa and Sanatan, who were chanting 64 into lakhs of holy name, you got an acharya who's telling you, you just chant 16 malas, I will guarantee you that I will take you back home, back to Godhead. Huh? He is telling, I will take you back home, back to Godhead, and you don't indulge in the 4 sinful activities. I will take you back home, back to Godhead. This holy name has got complete Shakti, and it's coming from an Acharya. But unfortunately, we have so degraded that we cannot even chant the 16 mala. 2 घंटा हम लोग भगवान को नहीं दे सकते, 24 घंटे में 2 घंटा भी भगवान को नहीं दे पाते, तो किस एंगल से आप कृष्ण के हो जाओगे और किस एंगल से कृष्ण आपके हो जाओगे? It's not possible. He is facilitating. He has started facilitating from Satyuga. He has started facilitating everything to all the jivas. Anadi adi kala se. Now, unfortunately, you have born in Kali Yuga, still he is giving you everything so easily, but you say, Nako paije, मुझको जरूरत नहीं, मुझको माया बहुत अच्छी लगती है, I don't want to chant. स्वामी जी, मैं तो ध्यान करता रहता हूं। किसी को भी पूछिए, बोला मैं ध्यान करता रहता हूं। किसका ध्यान करते हो? कुछ पता ही नहीं। कौन सा मंत्र जपते हो?
कुछ पता ही नहीं। मेरे गुरुजी ने मंत्र दे दिया, और क्या बोला साथ साथ में, किसी को बोलना भी नहीं। ऐसे रास्कल्स हैं, बहुत से ऐसे मूर्ख हैं, डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, कॉलेजेस गए हैं, ऑक्सफोर्ड में गए हैं, बोलते हैं मेरे गुरुजी ने बोल दिया, बोलने का नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान प्रेम धाई धाई करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल रहे जीवो ये नाम स्मरण करो, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये जो पाखंडी गुरु हैं, वो क्या बोलते हैं, मंत्र बोलने का नहीं। और क्या मंत्र होता है, जो भी मंत्र बोल सकते हो आप बोलो, मगर ध्यान करो। हम्म? जिस देवता को तुम भजते हो उसको पूजा करो और ध्यान करो। कहां लिखा है ये भागवत गीता में, कहां लिखा है भागवतम में, कहां लिखा है उपनिषदों में? तो रास्कल इज मैन्युफैक्चरिंग, and anybody who is manufacturing his own philosophy, he should be discarded immediately. Shastra says, because you get so much up emotionally and sentimentally attached to a phony guru, so you cannot discard him. Just like somebody who is worshipping the demigod, you tell him to now you just take the shelter of Krishna, you don't have to worship. वो डरता है, अगर ये देवता क्रोधी हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? Isn't it? इसी भ्रम के अंतर्गत हम कृष्ण का आश्रय नहीं ले पाते। भगवान बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। Because Guru is narrating these transcendental pastimes of Krishna, and he is impregnating you the seeds of bhakti by simply narrating you pastimes of Krishna's appearance and his leelas. And when you are soaked in these leelas, there is nothing left for you to meditate on. You just want to hear all the time, all the time, all the time, because these leelas are so powerful, so nice, that these narrations cut your knots of attachment. है ना? यहां पर दूसरे श्लोक में बताया अटैचमेंट को काटना कैसे, तो बहुत बहुत तकलीफ वाला कार्यक्रम है। मगर हां, तुम सदैव सत्संग में बैठोगे, ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला सुनोगे, तुम्हारी आसक्तियां कहां चले जाएगी आपको पता भी नहीं रहेगा सर, आपको खबर भी नहीं चलेगा। Just simply keep on hearing this, and then what will happen? You see, when you hear the appearance of Lord, so you will see that there is a very wonderful atmosphere in the whole Prakriti. हाँ? इस वक्त क्या बोलते हैं नक्षत्र है, रोहिणी nakshatra. Rohini nakshatra means when all the stars are in full bloom, they're pouring everything, all direction appear very pleasing, and beautiful stars twinkle in the cloud sky, decorated with towns, villages, mines, pasturing. Everything became so beautiful. It is just like the calf is given the birth, the mother cow has got full milk in the udders, and she doesn't know where to pour it. Even after the calf drinks the milk, the mother keeps on giving the milk. Isn't it? The same thing is when the mother nature comes to know that Krishna, the supreme personality of Godhead, is appearing, and she is in a complete, ecstasy, and everywhere what you see is very beautiful atmosphere.
Huh? You may smell a rose every day, but one day if you get a rose from Kashmir, you say that ye kahan se rose aaya? Because it is in full fragrance. And when Krishna appeared 5,250 years back, my dear brothers and sisters, so the whole nature was in full bloom. Everybody was in a welcoming mood. Kinnaras, every devatas, everybody was in a full bloom. And they, they poured the flowers. Even devatas poured the flowers from the sky. The mother nature became so beautiful. The Lord's appearance or a birth is not like an ordinary man who is forced to accept a material body according to his past deeds. The Lord's appearance is explained in the, the Lord appears out of his own sweet will. And when a time was mature for the appearance of the Lord, the constellation became very auspicious. The astrological influence of the, constellation known as Rohini was also predominant because this constellation is considered very auspicious. Rohini is under the supervision of Brahma, okay, who is born of Vishnu, and it appears at the birth of, Lord Vishnu, who in fact is birthless. According to the astrological conclusion, besides the proper situation of the stars, there was auspicious and inauspicious moments due to the different situations of the different planetary system. At the time of Krishna's birth, the planetary system were automatically adjusted so that everything became auspicious. At the time, in all direction, east, west, south, north, everywhere there was an atmosphere of peace and prosperity. Auspicious stars were visible in the sky on the surface of all towns and villages, pasturing grounds, and within the mind of everyone there was a sign of good fortune. Peacocks were dancing in the forest and they were singing the lores for mother. On the auspicious Lord's birth, seasonal changes took place throughout the entire universe. Krishna was born during the month of, what is this month called? Huh? September. Yet it appeared like a springtime. The atmosphere, however, was very cool, although that not chilly, and rivers and reservoirs appeared just as they would in Sarat, the fall. Lotuses and lilies blossomed during this day. The Brahmanas and saintly persons could not execute Vedic rituals with the peaceful mind, but now the Brahmanas were very, very peaceful. They started reciting because under the influence of this Kamsa, they were all terrified. But when these all things came, even the Brahmanas started singing the whole thing. Kinnaras and Gandharvas began to sing in praise of the Lord. Siddhas and Charanas, like that. Then the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who is situated in the core of everyone's heart, appeared before the heart of Devaki in the dense darkness of the night. उनके हृदय में जो परमात्मा वास कर रहे थे वो बाहर आए और उनके सामने चतुर्भुज रूप धारण करके बोलने लगे कि मैं आपका सुपुत्र क्योंकि मैं ही हूं. And then because Devaki was of the same category as Sri Krishna. So this verse indicates that Krishna said his entourage are of same spiritual potency. Ananda chinmaya rasa pratibhavita tabirya eva nija rupataya kalabhi goloka eva nivasti akhilatma bhuto govindamadi purusham tamaham bhajami. So
His mother, his friends, cowherd boys, and the cows, all expansion of Krishna, as will be, which is also mentioned in Brahma Samhita, Brahma Vimohana Leela. All these things you can hear from the Krishna book. So those who are not in full knowledge that the appearance and disappearance of the Lord are transcendental, Janma Karma Chame Divyam, are sometimes surprised that the Supreme Personality of Godhead can take birth like an ordinary child. Actually, however, the Lord's birth is never ordinary. The Supreme Personality of Godhead is already situated within the core of everybody's heart as an Antrayami, the super soul. Thus, because he was present in full potency in Devaki's heart, he was also able to appear outside her body. Then what is happening? One of the 12 great personalities in Bhishmadev, Swayambhur, Narada, Sambhu, Kumara, Kapilo, Manu, Pralado, Janako, Bhishma, he is saying in the Srimad Bhagavatam, canto number 1, chapter number 9 and verse number 42, Bhishma, a great authority to be followed by devotees, says that Supreme Personality of God is situated in the core of everyone's heart, just as the sun may be on everyone's head. Yet, although the sun may be on the head of millions and millions of people, this does not mean that the sun is variously situated. Similarly, because the Supreme Personality of Godhead has inconceivable potency. So, therefore, one should clearly understand that he did not live like an ordinary child in the heart or womb of a Devaki, nor did he appear like an ordinary human child. Although he seemed to be so in order to bewilder asuras like Kamsa, the asuras wrongly think that Krishna took birth like an ordinary child. That's how the modern Kamsas or atheists, they think that he is an ordinary child. And this is even presented in today's life. He is a simple man, but they don't know Krishna. Understanding the special significance of the appearance of the Supreme Godhead, one should never regard him as having taken birth like an ordinary child. भगवान एक साधारण बच्चे की तरह जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वो भगवान देवकी और वसुदेव, भगवान अपने अनन्य भक्तों को, देवकी और वसुदेव को बता रहे हैं कि मैं आपका बच्चा पहले भी था. कब कब? Prashni and Sutapa and Vamana and that's it. That's Vamana's. Who was Vamana's mother? Kashyapa. So now he, same Supreme Lord is saying that I have come before, I am coming again. So, like that we see this wonderful, appearance of the Lord, and this is very, very important, which all of you should remember. And Srila Prabhupada explains us that the 4 reasons why Lord is here. The first wonderful reason was that the Lord was not afraid to appear within the prison house of Kamsa. Okay? Then the second one was, although the Lord, the Supreme, transcendence is all pervading, he had appeared from the womb of Devaki. The third point of wonder, therefore, was that a child could take birth from the womb so nicely decorated. Fourth, the Supreme Personality of Godhead was Vasudev's worshipable deity, yet had taken birth as his son. For all these reasons, Vasudeva was transcendentally jubilant, and he wanted to perform a festival as a Kshatriya do to celebrate the birth of a child. And therefore he performed the festival within his mind. This was just as good. If one cannot externally, Prabhupada says, if you cannot externally worship the Supreme Personality of Godhead, आप मन से ही भगवान को
आराधना कर सकते हैं। जैसे कि भगवान बताते हैं भागवत गीता में, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। मगर इसका मतलब नहीं है कि आपके पास अगर सब साधन नहीं है तो भगवान को केवल केवल मन से ही स्मरण करोगे, तन से भी करना चाहिए। You see, you have to do it with manasa, karmana, vacha. Everything you have to do properly. So it is said, if one cannot externally serve the Supreme Personality of Godhead, one can serve the Lord within one's mind, since the activities of the mind are as good as those of other senses. This is called the non-dual or absolute situation. Advaya Jnana. People generally perform ritualistic ceremonies for the birth of a child. Why then should Vasudev not have performed such ceremony when the Supreme Lord appeared as his son? Because he was in the Karagar of Kamsa. So that's why he is using his mind fully in the service of. So Vasudev is saying, my dear Lord, you are the supreme person beyond material existence, and you are the super soul. Your forms can be perceived by transcendental knowledge. Again, Vasudev is saying that you can be perceived only through transcendental knowledge. Janma karma chame, isn't it? So this can be only perceived by transcendental knowledge, by which you can be understood as the supreme personality of Godhead. I now understand your position perfectly. Huh? One devotee who is complete in knowledge, he can only understand who Krishna is. So Vasudeva, being an Ananda devotee of the Supreme Personality of Godhead, he is very well understanding the wonderful pastimes of Krishna. So we have to keep on hearing these wonderful, pastimes very nicely, so that we can be also relieved from this material world. Of course, this chapter is a very, very long chapter, but already the time is over. I would like to also close. Any questions and any comments I would like to hear, okay? I would like to stop it here. Yes. No, you don't say that. You don't say that. One who is completely knowledge, till the time they are not in complete knowledge, you may be compassionate to them. But once one is completely in knowledge, he is not obligated to the demigods. Isn't it? Bhagavad Gita is explaining that. So, because देवों के भजने वाले देवलोक में चले जाते हैं, भूतों में चले जाएंगे. Isn't it? So why should we, tell such devotees to continue to make small temples for demigods and this and that, Devi Devata? No, it's not necessary. Krishna is rejecting it. It is because they have some material desires. मगर कृष्ण बता रहे हैं आपके पास काम हो, सर्व काम हो, जो कुछ भी है, मगर मेरी भक्ति करो, वो सब पूरा फुलफिल हो जाएगा. अगर आप कामना के रहित हो, कामना से भरे हो, किसी भी स्थिति में आप मेरे को भजो. That's very clear. But it's our own, ajnanata which makes us to. You can always respect them. You can always give due respect. Definitely you have to give full respect to them. But as Prabhupada says, you may have so many friends. That's okay. You may have so many friends. You have to marry one, isn't it? So that one is Krishna.
Once you're completely given yourself to Krishna, he will take care of you. He will protect you in every way. And you should have a complete faith. We should not give alternatives. Once we start giving alternative to the people, they will say, ye bhi chalta hai. श्रद्धा ठीक है, नमस्कार करना ठीक है, प्रणाम करना ठीक है, मगर आप अगर अपने ऑल्टर पे कई देवताओं को लगाएंगे तो फिर मन कहां रहेगा? फिर मन कहां लगाओगे? मन मना मद भक्तों मद्याजी माम नमस्करो, भगवान डिमांड करते हैं। वही इनिशियल स्टेज में ही तो प्रॉब्लम होता है, बाकी स्टेज में तो फिर लिबरेटेड हो जाते हैं ना सभी लोग। इनिशियल स्टेज ही अज्ञानता का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता था, लोगों को बोलिए कि भाई ये शिवलिंग में पानी डालते थे, आप जरा गंगा में पधराते, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेगा। बहुत से ऐसे लोग वीक माइंडेड। एनी अदर क्वेश्चंस? सो सब लोग सेवा कर रहे हैं अच्छी तरीके से, सबको सेवाएं हैं? श्योर? थक तो नहीं जाएंगे? जो थक जाएगा मेरे कमरे में आ जाना, मैं उसको मसाज कर दूंगा। आज मत थकाओ अपने आप को, आप जितना थकाना थकाओ भाई। सब लोगों को प्रचार करो। बहुत से लोग जितने आते हैं उन लोगों को मालूम नहीं है भागवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, जब क्यों करना चाहिए। प्लीज आज सुबह से शाम तक, रात के सुबह तक डटे रहिए, सब लोगों को प्रचार कीजिए। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड दैट विल प्यूरिफाई योर एग्जिस्टेंस, प्यूरिफाई देम, एंड likewise will be able to spread the Sanatan Dharma all over the globe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Sri Krishna Bhagavan ki, Sri Krishna Bhagavan ki, Gaur Premanande. Jai 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 Swami Prabhu.